सो हाय गाइस, आई एम फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। दिस वीडियो में कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं होगा, बट इट इज़ जस्ट अ स्टोरी कह लो या फिर लाइफ एक्सपीरियंस कह लो। नॉट इवन लाइफ एक्सपीरियंस, इट इज़ जस्ट जो मैंने लास्ट वीक कुछ एक्सपीरियंस किया, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। तो इट इज़ मोर लाइक आई हैड जॉइंड वन कोर्स, तो देयर वाज वन एक्टिविटी। तो ओके, इससे भी पहले आई जस्ट लेट यू नो कि ये है किस बारे में। तो यार, देर आर टाइम्स कि हमें बचपन से वी आर नॉट टॉट कि हमें अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहिए। वी आर यूजुअली लाइक कि क्यों करना है, इट इज़ जस्ट अ बेयर मिनिमम थिंग, राइट? कि क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, राइट? बट the story which I'm going to tell you now, which actually is an incident that happened with me, right? तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो हुआ क्या था, there was this activity जिसमें कि आपको थैंक यू बोलना था अपने पेरेंट्स को। you had to write a thank you letter for your parents, or I mean whosoever is close to you, you need to write the letter. So for me, my parents, of course everyone's parents are close to them, right? So I just wrote them a letter, and that was the moment when I realized कि how important is it to say thank you। बहुत टेंडर एज से ही why is it necessary कि आप कि पहले से इवन स्कूल में भी आपको सिखाया जाना चाहिए कि थैंक यू अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए, चाहे तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। सो हुआ क्या था दैट आई गेस इट वाज last week, yeah, last week it was. So I had to write a thank you letter to my parents. So I just because I am living away from my parents, so I can just directly say it to them on like in person कि ऐसा ऐसा है, whatever, कि I just want to thank you. I couldn't have spoken it that way, right? So what I did was I wrote a thank you note. So I sent it to my parents over WhatsApp. So I sent it around 12. रात को मैंने 12 बजे I just sent that, and it was something like कि thank you for everything that you have provided me, and for education whenever I needed you। जब भी मैं रोई तब आप रहे। There were many like ऐसे ऐसे lines थे which of course can make a mother emotional, because of course mothers are very emotional, right? So I wrote that letter, and morning time mein, it was I guess around 5 in the morning, right? So this is the interesting part, okay? So she just called me कि महिमा क्या, no, it was my father who called me. So I was like कि इतनी सुबह for the first time, तो I was just इतना नींद में किया, ठीक है, समझ में भी नहीं आया, तो इतना ध्यान नहीं गया। तो सेकेंड टाइम ही कॉल्ड अगैन, एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप कि हाँ जी पापा जी गुड मॉर्निंग एंड ऑल। तो दैट टाइम ही टोल्ड कि बेटे क्या हुआ, कि ये तूने क्या लिख के भेजा है? मैंने कहा कि थैंक यू नोट था। तो इट अगेन फिर मम्मी ने पापा से फ़ोन ले लिया कि महिमा बेटे क्या हो गया, ठीक है? तो क्या हुआ एकदम से ऐसे? शी वाज लाइक सो पैनिक्ड कि ऐसा सब तूने क्यों लिखा है, एकदम से ऐसा क्यों भेजा है? बिकॉज कि I think I don't think that I have ever thanked my mom and dad for whatever they have done for me, कि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ दिया, whatever a kid requires for the successful career or whatever is required, right? So they gave me everything, and all I had to say, or all I was needed to say, was just a mere thank you. तो अगर मैंने वो पहले बोला होता तो इट वुडंट हैव कम टू हर इन दिस वे, राइट? सो शी वाज लाइक कि you would find this part a bit funny, but it was कि ये note is similar to that of a person. If a person is committing suicide, that person writes such a note. Why the hell did you write such a note? So I was like कि नहीं, ताकि it was just a thank you note, कि आपने ऐसा क्यों समझा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, कि आपने मुझे इतना कमज़ोर बनाया है या whatever, कि इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ मैं कि आपको अपनी परवरिश पे। इट वॉज सो इतने ऐसे इमोशनल टाइप के डायलॉग्स बोले गए कि भाई हाँ, कि आपने मुझे इतना कमज़ोर थोड़ा बनाया है, और आपको पता है कि इतनी ऐसी परवरिश नहीं है मेरी कि इतनी छोटी सी चीज़ से डर के वो हो जाऊँ कि ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं भागने के लिए, तो अगर कंपनी में फॉर दैट मैटर अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आई जस्ट लीव दैट कंपनी, आई जस्ट वर्क आउट ऑफ दैट कंपनी। ये नहीं कि खुशी रहूँगी और एंड आई जस्ट फेस दैट होल ऑफ थिंग। बट कमिटिंग सच अ स्टेप, नेवर। आई एम नॉट दैट वीक अगर आप मुझे कंसिडर करोगे तो। इट इज़ नॉट अ सुसाइड नोट, इट इज़ जस्ट अ थैंक यू नोट। तो इट वॉज देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर बचपन में मुझे बताया जाता है या फिर स्कूल्स में बताया जाता है कि यू शुड से थैंक यू, और फॉर एवरी सिंगल थिंग, कि अगर यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, या फिर दे
अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो फॉर इवन दैट, सो छोटी से छोटी चीज़ के लिए यू शुड से थैंक यू, यू शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, राइट? तो इट वॉज देन कि काश मैंने पहले किया होता, कि तो अगर किया होता तो उस टाइम पे उस दिन वो चीज़ वैसे ना आई होती एंड शी वुडंट हैव बीन इन अटर शॉक कि एकदम से क्या हो गया, कि उसने ऐसा क्या कर लिया कि रात को ऐसे भेज रही है, तो इट वुडंट हैव कम इट दैट वे। तो आई जस्ट कंसिडर्ड कि आई शुड शेयर इट विद यू गाइज, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी कंसिडर कि ये बहुत छोटी सी बात है कि थैंक यू बोलना या कुछ भी है, रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ का। एंड सम ऑफ देम, लाइक इवन आई हैड दिस थॉट कि यार थैंक यू बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हम किसी और को छोटी सी चीज़ के लिए पेंसिल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, बाहर हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं, राइट? बट वही सेम चीज़ अगर आपको अपने पेरेंट्स को बोलनी पड़ रही है तो यू गेट अ बिट शाय कि यार कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, बिकॉज वी ऑल आर इन दैट जनरेशन कि अपने पेरेंट्स से बात करने में या शेयर करने में थोड़ा से इशूज़ आते हैं कि यार कैसे करना है, क्या करना है, थैंक यू बोले कि इतना कुछ कैसे शेयर करो। तो बट I realized it over time, but if you are someone who is younger to me, तो I would just advise कि यार you should thank your parents हर एक चीज़ के लिए, because they have done a lot and I learned it at this age, but trust me, it is very much required and it does help, because your parent blessings is everything that you need and they are the one who have brought you up to this level कि अब तुम खुद के लिए earn कर सकते हो, खुद का stand ले सकते हो, right? So I believe that you should also do it as well. So this was this one incident which I very much wanted to share with you guys, because of course it is important. So that was pretty much, it was not a part of that podcast which I, not even a podcast, that it's not a part of that video, it was just a thing which I wanted to share with you all ki, because I wanted to share the incidents which are happening with me and which might also influence you in a good way, or you might also get like हाँ कि ये चीज़ सही है, we should do this thing. So it's up to you whether you want to do it or not. So that's it for this video. Thank you and have a nice day. And हाँ, कल सबको ऑफिस भी जाना होगा जो मेरी एज के होंगे, तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।